Hello everyone, welcome back to Sports Khabri, Curious Harry, Indian Food and Football, and Arun Food. Arnava is going to be a little late today. But until then, we're here, Hiren, Shayan, and I, and we're going to talk about some interesting news that's come out with regard to our favorite topic, refereeing and Indian referees, because we have had so much discussion about Indian refereeing. Kalyan Chaube has decided to request Gianni Infantino to send over Pier Luigi for refereeing coaching sessions with regards to Indian referees. Very interesting. Of course, Pierluigi Collina, probably regarded as one of the best referees uh, of world football. Hiren, first thoughts on this because it's much needed for Indian football. I think 100% I am really excited. Mr. Pierluigi Colina is a world renowned referee. जिस तरह की वो उनकी एक मतलब उनका उनका चेहरा भी जिस तरह का है और जिस तरह की उनकी कमांड थी और अगर जिन्होंने पुराने मैच देखे हैं उनको पता होगा कि जिस तरह से वो मैच को कंडक्ट करते थे सच में मतलब जैसे आपको क्रिकेट में होगा पता होगा साइमन टफल थे तो जो मतलब एक ऐसे को क्या बोलते कि अंपायर माने जाते थे कि जिसकी हर कोई रिस्पेक्ट करता था तो सेम गोज विथ मिस्टर कोलिना आल्सो एंड 2002 फाइनल ब्राजील वर्सेस जर्मनी 1999 यूएफए चैंपियंस लीग फाइनल तो ऐसे बड़े इवेंट्स भी जिन्होंने मतलब किया है और अभी करंटली फीफा के हेड ऑफ द रेफरिंग है सो उसको लाना आई थिंक काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक चीज हमने आईएसएल में जरूर देखी है कि रेफरी के ऊपर आप देखिए प्लेयर चढ़ जाते हैं जब कोई रेफरी डिसीजन देता है और रेफरी वहां पे उस पोजीशन पे भी नहीं रहता कि उसको कार्ड भी दिखाता है वो मतलब क्या बोलते हैं कि प्लेयर से उनके ऊपर दबाव बना देते हैं एंड आई थिंक कोलिना से वही सीखने को आई थिंक ज्यादा जरूरी है किस तरह से आप गेम को कमांड करेंगे और किस तरह से आप अपने डिसीजन के ऊपर स्टैंड करेंगे और किस तरह से आप प्लेयरों के साथ आपका वो इंटरेक्शन होना चाहिए तो आई थिंक जो हमारे मैच ऑफिशियल्स है जितने भी आईएसएल के इंडियन मैच ऑफिशियल्स उनके लिए आई थिंक काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा इस तरह के से ट्रेनिंग सेशन में उसके साथ टाइम बिताना कि जो कि वर्ल्ड के मतलब वन ऑफ द बेस्ट रेफरी माने जाते हैं तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव टेप क्योंकि न्यूज ये भी आ रही कि कल्याण चौबे वी आर लाइट ही लाना चाहते थे लेकिन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की जगह कंस्ट्रेंट की वजह से ऑब्वियसली वो नहीं कर पाए तो आई थिंक इस तरह के Yeah. प्रीमियर लीग के जो रेफरीज है उनके साथ हमारे रेफरीज का वो सेमिनार हुआ था तो इस तरह के आई थिंक करना पड़ेगा तभी जाके जो हमारे रेफरीज का है उनका थोड़ा सा लेवल बढ़ पाएगा तो मेरे हिसाब से स्टेप इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन Yeah, very good. Actually, I mean, it's a wonderful step. Shine, Hiren mentioned a very important point. We've seen too many times in ISL matches that players kind of surround the referee, and the referee is not doing much about it. They're shouting at the referee, they're going at him. Almost feels like they're going to throw a punch at him, but the referees don't do anything. So, is it a good step? Because I think referees need to get strict and they need to card players when they speak like that. What do you think about this decision and about Hiren's point as well? I think it's a very good move by the All India Football Federation to getting the referee. I think we need to get back these referees because we know we have been very critical. हम लोग काफी critical होते हैं उनके ऊपर ये बात है हम लोग बार बार बोलते भी है दैट रेफरी अच्छा नहीं है बट उनके बेटरमेंट के लिए क्या करना चाहिए ये भी हम लोग नहीं बताता आई थिंक दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्योंकि आप आपने एकदम सही बताया जब मैदान में गेम होता है पीपल उनके पास पावर रहता है पीपल आई थिंक कोई भी मैं देखा फॉरेन प्लेयर्स तो एकदम सराउंड कर लेते हैं दे स्टार्टेड अब्यूज हल कर लेते हैं रेफरी के ऊपर आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है का कैसे आई थिंक दे वुड अंडरस्टैंड कैसे उसको कंट्रोल करना है हाउ दे कैन डिक्टेट टर्म्स अभी क्या होता है इंडिया में देखता हूँ प्लेयर्स ही डिक्टेट कर देते टर्म्स और रेफरी भी कार्ड दिखाने में बहुत सोच करके उनको कार्ड दिखाना पड़ता है बिकॉज उनको भी बैकलैश मिल सकता है वो सोच के because अभी हम लोग को ये माहौल बनाना जैसे रेफरी को फुल फ्रीडम दे तभी हम लोग को अच्छा गेम दिखने को मिलेगा तभी हम लोग को फेयर जजमेंट देखने को मिलेगा बिकॉज यहाँ अभी रेफरी को मेरे को ज्यादा वो खुद कुछ क्या सोचते हो क्या करते हैं मैदान में वो कभी कभी डिपेंड करता है पब्लिक क्या सोचती है प्लेयर क्या करते हैं उसके ऊपर अगर उनके पास उतना ऑथोरिटी और पावर रहेगा और वो ठीक से उसको यूज कर पाएंगे विद प्रॉपर सेमिनार और प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडेंस आई थिंक तब तब हम लोग का जो सुधार चाहिए फ्यूचर में फुटबॉल का बेटरमेंट के लिए रेफरिंग अच्छा होगा गेम्स बेटर होंगे रेफरी अच्छे होने से सिर्फ रेफरी अच्छे नहीं होती गेम्स बेटर होने लगेंगे वो भी काफी इंपॉर्टेंट है तो ये चीज हम लोग को देखना है एंड आई थिंक ये अच्छा वेलकम मूव है आई और मेरे को लगता है ऐसा और कुछ बहुत सारे चीज करना चाहिए आई थिंक मैं एग्री करता हूँ अभिषेक भी बोल रहा है
रेफरी यहाँ पर कभी कभी प्लेयर लोग को सर बोल देते हैं। आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड रेफरी को उतना, ठीक है रेफरी इज रेफरी, आई थिंक वी शुड हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर रेफरी, एंड रेफरी का अगर क्वालिटी है अच्छा होगा, गेम्स का क्वालिटी इंप्रूव करेगा। और मैं बार बार बोलता हूँ, एज एन फैन, spectator, or a player should not dictate terms. It's the referee who should dictate terms in the field, and not no one else. No, but it's such a important thing that Abhishek has just said, which is calling anybody sir. It kind of shows that the players are bigger than the referees, doesn't it? Like, is that indicative that we're living in a place where, Shane, like you mentioned, sometimes the players are bigger than the referees, but that shouldn't be the case. दैट्स वाई जो इस तरह के जो रेफरी जो मिस्टर कोलिना है, रोज, जिन्होंने मतलब इतने बड़े मैचेस मतलब क्या बोलते ऑर्गेनाइज क्या बोलते ऑफिशिएट किए हैं, जिनको एक्सपीरियंस है। अगर मान लीजिए कि आपने उन्होंने 2002 का फाइनल किया था, तो वहां पे ब्राजीलियन रोनाल्डो, रोनाल्डिन्हो, इस तरह के लेजेंड ऑफ द गेम थे कि दोनों टीम में थे, एंड उनके सामने किस तरह से आपको कंडक्ट करना है। उन्होंने उसके बाद भी जिस तरह के मैच ऑफिशिएट किए, तो उनको एक्सपीरियंस है कि भाई मेसी, रोनाल्डो ऐसे बड़े पर्सनालिटीज भी होते हैं, लेकिन उसके सामने भी आपको अपने डिसीजन के ऊपर कैसे स्टैंड करना है, किस तरह से आपको गेम को कंडक्ट करना है। आई थिंक दिस आर दी थिंग्स जो हमारे रेफरीज को भी काफी एक वैल्यूएबल लेसन मिलेगा, एंड ये सारी एक्सपीरियंस बात जब शेयर होगी तो हमारे रेफरीज को भी एक आइडिया मिलेगा कि हाउ दे गो अबाउट देयर वर्क इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, की जहाँ पे सामने कोई बड़ा प्लेयर है जिसको मतलब अगर आप उनको कार्ड दिखाओगे तो आपको पता है बैकलेस मिलने वाला है। एंड एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये भी देखना चाहूंगा कि जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स है, चाहे आईएसएल, एफएसडीएल हो या फिर एएफएफ के पास है, वैसे तो जो रेफरिंग का सारा काम है वो वही देखते हैं, आईएसएल का भी। तो उसको यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा बैकिंग ज्यादा देना पड़ेगा, उनको एक कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा रेफरीज को कि आप चाहे भले ही एक आध दो एरर करो, लेकिन यू हैव अ फ्रीडम। वो एक, क्योंकि उनको भी Exactly. पता है कि अगर मान लीजिए कि पब्लिक का बैकलेस आया और अगर एएफएफ ने उनके सामने कदम ले लिया, हमने ऑलरेडी क्रिस्टल जोन के साथ देख लिया कि उनको यहाँ पे उसके सामने क्या चीजें हो रही है, इस तरह से उनको यहाँ पे काफी सारे मैचेस से हटा भी दिया गया था। तो आई थिंक एक फेयर इवेल्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है मैं बोल रहा कि बिल्कुल उनको खुला दौर दे देना चाहिए कि भाई आप जो भी करेंगे, गलत डिसीजन करेंगे तो भी आपके सामने एक्शन नहीं होगा, लेकिन एक उनको भी वो एक कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि जहाँ पे वो मतलब ऐसे बड़े प्लेयर्स हो कि जिनके सामने डिसीजन बनाने से टकराए नहीं, कि अगर उन्होंने फाउल किया है तो डेफिनेटली देयर शुड बी क्या बोलते कि कार्ड और यू कैन से एक्शन अकॉर्डिंग टू देम। So I think वो भी एक जरूरी है। So I think it's a great thing. Yeah, Ayush will get to the Blue Cups program. We're going to discuss this refereeing part first. I think very important part, because we've seen certain decisions, certain decisions, obvious decisions that haven't been taken. Shan, do you think this will sort of improve decisions? Because I still feel like the human element part, referees might get it wrong, might not. But what I most looking forward to is that referees will take control of a match. I still feel like there will be, a fair few wrong decisions that we call. But yeah, do you think the number of decisions that we get wrong will reduce? वो तो होगा, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली Okay. 100% परफेक्ट कहीं पे नहीं है वर्ल्ड में, कहीं पे नहीं है। अगर आप कहीं पे देख लो, हम लोग हाउ वी आर क्रिटिकल ऑफ आईएसएल रेफरीज, आई थिंक मेनी रेफरिंग आउटसाइड आईएसएल आल्सो बहुत खराब है। ये मानने में मेरे को कोई हर्ज नहीं है। ह्यूमन एलिमेंट का पार्ट है, उना उदास में हम लोग डिस्कस भी करते हैं हाल फिलहाल में, ह्यूमन एलिमेंट का पार्ट है। बट एक चीज है, 100% जो आप राहुल बोल रहे हो, आई थिंक एरर्स का जो परसेंटेज गिरेगा ही गिरेगा, 110% गिरेगा ही, 100% ही गिरने वाला है, और वही चाहिए। एरर्स जितने कम होंगे, आई थिंक फिर क्या होगा, रिजल्ट्स फेयर होंगे। आई थिंक दैट विल बी, एरर्स अभी जितने जहां पर है उससे सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होंगे अगर ऐसा ऐसा किया गया तो, रेफरीज के पास कंट्रोल है गया तो, बिकॉज तब क्या होगा ना, यू विल गेट प्रॉपर रिजल्ट्स एंड प्रॉपर गेम ऑल्सो। तो मेरे को लगता है ये 100% आपसे मैं पूरा एग्री करता हूँ, दैट मोर एंड मोर पावर, एंड आई थिंक रेफरी टेकिंग कंट्रोल इन द ग्राउंड विल लीड टू लेस एरर। आई थिंक एरर कम होंगे बिकॉज ही विल हैव दैट कॉन्फिडेंस, ही कैन पुल इट थ्रू। वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, सैम दा ने जो बोला बिल्कुल सही बात है। और एरर कम करने के लिए आपको सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसे सेमिनार से काम पड़ेगा, आपको क्योंकि इन मैच एक्सपीरियंस भी चाहिए जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। कि तो आई थिंक उसके लिए यहाँ पे और भी ज्यादा उनको एक्सपोजर देना पड़ेगा, और भी ज्यादा इस तरह के रेगुलर चीजें करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने वंस इन अ वाइल कर दिया, तो उनको रेगुलर इस तरह के सेमिनार्स, इस तरह के जो चीजें हैं, इस तरह के बड़े रेफरीज का और उनका गाइडेंस देना पड़ेगा, तब जाके वो अपने आप को देखेंगे कि यहाँ पे मैंने कौन सी चीजें गलत की है, कौन सी सही की है। तो पूरा उनको भी एक एज
फोकस लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने जब ऐसे कोई इवेंट हुआ या फिर कोई गलत डिसीजन दिया तभी उस टाइम पे आपने कर दिया। आई थिंक उनका भी एक जो प्रोग्रेस है उसका आपको प्लान बनाना पड़ेगा एंड उसको लेके चलोगे तब जाके आपका रेफरी का डेवलपमेंट आपको आगे आने वाले सालों में दिखेगा। एंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है जो आई थिंक इस तरह के सेमिनार से जो फायदा होता है वो होता है मैच कंडक्ट। किस तरह से रादर देन देखिए ह्यूमन एलिमेंट है तो वो ऐसा तो नहीं कि कोहली ना आके कुछ बता देगा तो आप ह्यूमन एरर कम हो जाएगा, वो नहीं होने वाला। वो तो जब वो रेफरी खुद यहाँ पे इन मैच एक्सपीरियंस करेगा और उनकी जो टैलेंट है उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो किस तरह से मैच कंडक्ट करना है, सिचुएशन को कैसे कंडक्ट करना है, सारी चीजें आई थिंक वो बेटर तरीके से ये लोग कर पाएंगे कंपेयर टू अभी जो होता है। क्योंकि अभी हमने कभी कई बार ऐसा देखा है कि कोई डिसीजन ऐसा होता है कि जो साइड लाइन रेफरीज का रोल जहाँ पे काफी क्रूशियल होता है या फिर उसका से ज्यादा होता है, वहां पे भी हमने देखा है कि रेफरीज उतना ज्यादा उनसे डिस्कस नहीं करते या फिर किस तरह से कब वो करना है वो सारी चीजें वो कभी कभी क्या बोलते हैं हीट ऑफ द मोमेंट पे या फिर प्लेयर जब उसके ऊपर आके चढ़ जाते हैं तो वो नहीं कर पाते। सो आई थिंक वो एक चेंज होगा कि इस तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पे अगर उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो हमारे ऑफिशियल को पता चलेगा कि हाउ ओवरऑल गेम हैज टू बी मैनेज एंड बेटर तरीके से पूरा गेम मैनेज होगा रादर देन कि इंडिविजुअल मिस्टेक तो होगी। वो तो हमने मलेशिया वाले गेम में देख लिया कि भाई आपने लाइन क्रॉस कर लिया वो गोल नहीं दे रहे। तो ओवरऑल रेफरी का जैसे मैंने बोला एग्री करता हूँ कि वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड वो तो ह्यूमन एरर है, ह्यूमन पार्ट इन्वॉल्व है तो वो तो होगा। लेकिन ओवरऑल मैच कंडक्ट करने में आई थिंक बेटर उनको आइडिया मिलेगा। I have a question for both of you. Is this a general feeling that I've had when I see Indian football? I see there are too many fouls in Indian football that are not called. Too many fouls. Rash challenges that probably you would see red cards for, they're not even called. So, do you guys think that first of all, do you agree with me? Do you think that there are too many fouls that are not called? Because I feel like the Indian league sometimes is a little too physical, and I I agree. understand it's yes, I understand it's a contact Rahul, sport, but it's too rash sometimes. Rahul, correct, correct. Rahul, I think one part you've correctly pointed out this. I think आपका जो आपने जो बोला ये पॉइंट है ये काफी इससे मैं पूरी एग्री करता हूँ बिकॉज आप देखोगे हाल फिलहाल जब हम इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं तब हम लोग को समझ में आता है ये जो टैकल्स हम लोग करते हैं हम लोग को कार्ड नहीं मिलता है। हमारे प्लेयर्स जब इंटरनेशनल मैच खेलते हैं तब उनको लगता है कैसे उनको ये कार्ड मिल गया बिकॉज वो यूज टू नहीं है, वो वैसे ही चैलेंज करते हैं उनको कार्ड मिल जाता है तब तब तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बहुत करेक्ट चीज एक चीज पॉइंट आउट किया है बिकॉज आप सही बोले हो इंडियन लीग में कभी कभी फिजिकल हो जाता है और कभी कभी फाउल्स नहीं दिया जाता है या कार्ड है रेड कार्ड ऑफेंस को भी रेड कार्ड नहीं दिया जाता है जो इंटरनेशनल मैचेस में हमको कॉस्ट कर जाता है। तो तब हम लोग के पास उतना एडवांटेज नहीं रहता। तो ये चीज बहुत Exactly. इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू हैव पॉइंटेड आउट। हिरेन आपका क्या लगता है? आई थिंक आई एग्री विद यू इन दैट। मैंने एग्री में सैन भाई आपने बिल्कुल सही बात है क्योंकि हमने जैसे मलेशिया के सामने हमने जो पेनल्टी देखा वो हमें लगा कि वो बिल्कुल पेनल्टी नहीं है क्योंकि आईएसएल में ऐसा पेनल्टी आपको दिया ही नहीं जाता। जबकि जो आपका प्लेयरों का इंस्टिंक्ट है वो उसी तरह से डेवलप होगा क्योंकि वो पूरे साल वही खेलते Exactly. रहेंगे। Exactly. तो क्या उनको वो उस इंस्टिंक्ट के चलेंगे कि भाई ये तो फाउल नहीं होगा। लेकिन आप इंटरनेशनल मैचेस और कोई आप दूसरे कंपटीशन में खेलने जाओगे चाहे वो एएफसी कंपटीशन हो तो वहां पे उसको फाउल दे दिया जाएगा एंड वहां पे पेनल्टी मिलेगी। सो दिस नीड्स टू चेंज एंड उसके लिए आपको रेगुलर, मैंने जैसे बोला कि रेफरिंग को ऐसा नहीं है कि कोई एक डिसीजन जब हुआ या फिर वंस इन अ वाइल आप ये चीज करते रहो। आपको इसको लगातार तरीके से रेफरीज को भी बताना पड़ेगा कि किस तरह से वर्ल्ड स्टैंडर्ड में किस तरह की रेफरिंग हो रही है, किस तरह के डिसीजन यहाँ पे किस लेवल पे दिए जा रहे हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपको आईएसएल में ऑफिशिएट करना पड़ेगा। आप आईएसएल को उसके उसके क्या बोलते हैं आपने जैसे बोला कि काफी रेस्ट टेकल होते हैं उनको मतलब ये कार्ड तो क्या फाउल भी नहीं दिया जाता, मैच कंटिन्यू किया Exactly. जाता है। सो Exactly. तो डेफिनेटली वो एग्री करता हूँ मैं आपकी बात से कि कहीं ना कहीं वो सारी चीजें भी काफी ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है एंड तभी होगा कि जब रेगुलरली आप क्या बोलते हैं रेफरीज का जो एक इवोल्यूशन है या फिर उनका जो एक क्या बोलते हैं कि लर्निंग है वो चालू रखेंगे तभी हो पाएगा। Yeah, again, another important thing that Abhishek is saying. Abhishek, of course, I don't remember exactly what you're talking about, but he's talking about the comparison between Murtada Fall when he was playing for Mumbai City versus playing in the AFC tournaments. Because not only at international level, but these clubs have to play at Asian level, and the refereeing standards will be different. So again, another important factor that they have to ensure that these standards are there in ISL so that you can apply it in Asian competitions as well. So yeah, I mean, it's going to be very interesting. What do you think is the main message that uh,
Luigi Colina will have to deliver to these Indian referees? What do you think is the main thing that if you are coming into the Indian system, what does he have to address the most important? What's the most important thing to address, guys? Sense of belief, I think. Sense of belief, I Okay. think. Belief जो I think both referees miss करते हैं, है ना, in when they are in the field. इंडिया का सबसे बड़ा बिलीव रेफरी का प्रॉब्लम, वो अपने डिसीजन को बैक नहीं कर पाते, उनको डर लगता है, वो लोग को क्या लगेगा, पब्लिक क्या सोचेगी, हाउ द ऑर्गेनाइजर्स विल रिएक्ट, हाउ द प्लेयर्स विल रिएक्ट, उससे उसको दिखना है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, वो दूर करना उनका, आई थिंक दैट विल बी हिज मेन रोल, आई थिंक। अगर वो कर देते, आई थिंक, देखो ये चीज ना एक सेशन या दो सेशन से नहीं होता है, he has to give that belief to them, and I think अगर दो एक सेशन से क्या होता है, उनका आँख खुल जाता है, if you are with a good player, good referee, no, I think उनका भी आँख खुलेगा, and I think उनको भी लगेगा नहीं नहीं, we can do it and we can take control of the game, वो होगा। Exactly. आई थिंक मेरे को लगता है उनका मेन कोलिना आने के बाद मेन उनका काम होगा साइकोलॉजिकली, जो हम लोग रेफरी जैसे सोचते हैं, उनको साइकोलॉजिकली दे हैव टू थिंक डिफरेंटली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं करोगे तो नहीं होगा भाई, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी। Hiren, you agree? आई थिंक कंप्लीटली एग्री विद सेंदा कि आपको जो मेंटल कॉन्फिडेंस आपके हमारे रेफरीज को देना पड़ेगा कि आप अपने जॉब की सारी चीजें छोड़ के आप किस तरह से डिसीजन मेकिंग करना है। आई थिंक वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर अगर कोई इतना बड़ा बंदा आके बोलता है तो आपको मिलता है कि हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ। सो आई थिंक दैट्स दी, मैंने जैसे बोला कि वो कोलिना के आने से 2-3 ट्रेनिंग सेशन करने से ये नहीं हो जाएगा कि आपके रेफरीज का जो एरर है वो कम हो जाएगा, वो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल किस तरह से मैच कंडक्ट करना है, किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है, वहां पे उनको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। एंड अगर वो इन मैच एक्सपीरियंस उसको यूज करेंगे एंड बेटर तरीके से होगा तो डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होता जाएगा। एंड मैंने इसीलिए बोला कि एक दो सेमिनार से नहीं होगा, लगातार आपको जो रेफरी का डेवलपमेंट है वो करता रहना पड़ेगा एंड इस तरह के सेमिनार करते रहने पड़ेगा, एक्सपोजर देता रहना पड़ेगा आपको रेफरीज को, तभी जाके उनको जो कॉन्फिडेंस की जरूरत है वो सारी चीजें है तभी मिल पाएंगी। सो उसके बाद ही जितना इन मैच एक्सपीरियंस होगा आई थिंक उतना उनका डिसीजन मेकिंग भी एक वो उनके भी इंस्टिक आ जाती है कि यहाँ पे किस तरह से हमें यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बनाना है। सो आई थिंक इट्स मोर अबाउट मेंटली रादर देन कि भाई एरर्स कम करने, वो तो आई थिंक बेसिक तो हर किसी को पता ही होता है, लेकिन वो इंस्टिंक्ट की बात होती है। सो आई थिंक ओवरऑल इट्स Polina's visit will I think boost their confidence and overall you can say game reading. Again, I think generally what I've got from both of you, and I agree with both of you that it is the mental side and is that confidence and self belief that we see these Indian referees really lacking. Yeah, Abhishek again pointing out very rightly, but in language that we can't use right now. But Arnava is here with us, and Arnava, we're talking about PLOG Colina coming to India and coaching Indian referees. What sort of impact do you think this will bring on now? Because we've spoken about it briefly. We stated that, of course, the self belief part is something that Indian referees lack. Of course, all the errors will not go away, in-game errors, and that's normal. That happens everywhere in football. But sort of the ability to stand up for your decisions and really take some important calls is something that we believe is lacking. Do you agree? And what is your take on this whole situation? See, it's good if people like Pierluigi Colina come and work with the refs. It is good if an Arsene Wenger comes to India because also there's a certain level of media interest, media focus. These kind of things are good. It's not like the carnivals we are having at the moment in Kolkata with Ronaldinho there, last year Cafu there. There are people, that has no value for football. No value for football. It's just a marketing gimmick. But if a Colina comes, and Hiren and Shayan were mentioning it, just seeing the aura of a Pierluigi Colina, you were shit scared as a player when the guy came onto the field. He looks at you and says, "Bhai, look away," right? That is but this is something which you need to learn. And this is something, if you're watching our referees, they stand for their decisions. Take the referee the other night in the Medica Cup. They got it totally wrong. But they stood by their decision, right? And you did not see Sunil did it at the SAF Cup. He ran across the field. He was arguing with the referee. There he pleaded twice. He's realized, I cannot do that in the Medica Cup. I will not be able to do it in the AFC Asian Cup. And
very quickly, despite the mistake, the match went on. Right? So this is something also, how do you sell yourself on the field? Do you have that self-belief, that self-confidence to stand up for a decision which you've taken? And I take another example. Crystal John, BFC versus Blasters. Right or wrong, different discussion. But Crystal John clearly stood by the decision that he took. That is something which 5 years ago, 10 years ago, even worse, 15, 20 years ago, Shayan's hero, Mr. Baichung Bhutia, used to push around referees. Baichung had no, but the referees were allowed to be pushed around. Today, if you touch a referee, if you push a referee, he'll give you a card. And mindset is right. Personality and a confident, I wouldn't say good body language, I would say a confident body language. You're assertive. But also, Kulina, despite having that aura, always communicated with the players, spoke with the players. And I think that is something which I think our Indian referees can learn most. And what has been said, 2 sessions, 3 sessions might not make a difference. But if that thinking is instilled in their heads, that is something which is important. And we have to be honest. You've mentioned it. Even if we are in the Premier League, mistakes are happening, and mistakes will happen. Football, as long as you have the human element regarding refereeing, be it the match referee on the field, be it the VR referees watching it on the television, mistakes will happen. The aim needs to be reduce the mistakes. Yeah. And that is something which is very, very important. And if they can learn that, if that is the lesson they learn from a Kulina, then that Kulina visit has been worthwhile, has been useful to our Indian football. Absolutely. And I think we are all really hopeful that confidence and that belief is brought about. You spoke about Crystal John and how he stood by his decision. And we spoke about this, the three of us, just before you entered. That sometimes the referees don't shell out cards when they're surrounded by players. Players are pushing the ref. I mean, not literally, but like pushing him around left, right, center. But the referee doesn't quite show the cards. Do you think that element also has to change? Do you agree with what I'm saying? First of all, that sometimes you feel like referees aren't giving out enough cards because they are scared. I mean, to finish off this topic, because I think we are going to be too long if you want to cover other topics as well. You saw that how Indian players behave in international football, right? And I think they still argue too much. Especially the foreigners get away with a lot in the ISL, right? And it doesn't matter which team it is. And if these small things can help, and it's not just a Kulina, it needs to be others, top referees from FIFA, from potentially UEFA coming over. And it's not an Indian problem. I think Asia generally, I think there used to be, what was his name? Irmatov, an Uzbek referee, who was world class. But how many Irmatovs do you have in Asia? So that is something that not only India, but Asia needs to come out. If you look at South American referees sometimes behave as if they're generals on the field. Don't come close to me. So that is something. Can you learn these nuances? I think nuances are important. And then, of course, there are two things. Positioning. I think Kulina can tell you where to position. How do you run? Do you run, how do you run on the field to have always the proper view? Those kind of things. Yeah. And that is, if we can learn that, huge thing. But on that front, I think there will be a lot of things happening because both FIFA and AFC are trying to help the AFF. I know we've criticized them in regard to the refereeing, but I've always defended the referees because at the end of the day, do not forget, we have to live with these referees who we have. They have to develop, and these referees are there. If we lose the top referees that we have in India, the next batch is not ready, and there'll be even worse decisions. This is something which people very often forget. So therefore, I do try and stand up for referees
They'll make mistakes. Sometimes I'll be not happy. Sometimes Shine will not be happy. Sometimes you, Rahul. Sometimes Hiren will not be happy. I think I'm a little the elder statesman over here. That's why I try to not get annoyed by these referee things. But there's enough in every game where both teams can be unhappy. That's true. That is, I mean, that is football, right? So it's okay. Hiren, moving on to the Blue Cups program, and lot of there's some news on it. The AFF have officially launched the Blue Cups program, but what do we know about it, Hiren? What is the Blue Cups program? If you can just throw some light. ब्लू कप्स इज बेसिकली इन लोगों ने जो पहले बेबी लीग्स होता था उनको मतलब एक पूरी जो सारी बेबी लीग्स और उन सबको होता है उनको एक एक क्या बोलती है कि अंडर दी वन रूफ ऑफ ब्लू कप्स। और ब्लू कप्स नाम इन्होंने इसलिए रख दिया कि भाई आपका ब्लू टाइगर्स या ब्लू टाइगर्स आपके सीनियर टीम्स का नाम है मेंस एंड वुमेन्स का। तो जो उनके बच्चे होते हैं ऑब्वियसली उनको कप्स है, तो उसके चलते उन्होंने एक ब्रांडिंग, अगर आप बोलेंगे कि बेबी लीग्स का जो ब्रांडिंग है उसको चेंज करके ब्लू कप्स कर दिया गया है, कि जहाँ पे 4 से 13 साल के बच्चों को इंक्लूड किया गया है। और उनके लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पहले यहाँ पे ब्लू कप के रिगार्डिंग पिचेस का भी और किस तरह के फॉर्मेट होंगे। यहाँ पे 5 साल का बच्चा है तो 3 वर्सेस 3 का फॉर्मेट होगा, 7 साल का बच्चा है तो इस तरह से फॉर्मेट होगा। ये पहले उन्होंने अनाउंसमेंट कर रखा था, लेकिन जो आज का डिसीजन है वो है ब्लू कप्स लीग्स की, जहाँ पे इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हम यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल से यहाँ पे क्या बोलते ब्लू कप्स लीग्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं। अब एग्जैक्टली किस लेवल पे होगी, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से स्टेट अफेयर्स, इसमें आई थिंक ज्यादा रोल मेरे को लगता है कि एएफएफ तो डेफिनेटली चाहती है कि इम्प्लीमेंट हो, लेकिन द मोर इम्पोर्टेंट रोल विल बी ऑफ स्टेट अफेयर्स एंड डिस्ट्रिक्ट अफेयर्स। कि हम सबको पता है कि 2-3 स्टेट को छोड़ के आपके जो बाकी दूसरे स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट अफेयर्स है वो उस तरह से वर्क नहीं करते कि जहाँ पे वो अपने सीनियर टीम का भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई टूर्नामेंट नहीं करवाते। तो उनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ग्रास रूट लेवल पे वो करें। तो आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली है, चैलेंज भी है एएफएफ के लिए इसको इम्प्लीमेंट करवाना टू द ग्रास एक्चुअल में, कि जहाँ पे काम नहीं होता वहां तक। एंड हर किसी डिस्ट्रिक्ट को बोला गया है कि आपको एक ब्लू कप्स कमेटी भी बनानी है। सो देखिए, अगर ओवरऑल प्लान देखें तो दिस इज अ गुड प्लान, बट इम्प्लीमेंटेशन विल बी द मोस्ट क्रूशियल थिंग। एंड अभी भी यहाँ पे आप देखिए कि मेरे को जो ज्यादा आई वुड से कि हम आगे उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आई थिंक दिस इज अ गुड स्टेप, बट आई वांट टू मोर यू कैन से फोकस ऑन दी 13 से जो 19-20 साल का जो हमारा प्रॉब्लम है, कि जहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है। क्योंकि बेबी लीग्स तो पहले भी हमारे पास थी, मतलब नॉट इन अ सेंस कि इतने बड़े कंट्री में इनफ नहीं थी, लेकिन फिर भी थी। लेकिन उसके बाद का जो हमारे पास एक जो क्या बोलते खाली 13 से 20 के 20 साल के तक हमारे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि जहाँ पे हमारे प्लेयरों का उस लेवल पे डेवलपमेंट हो पाए। सो मैं उसके रिगार्डिंग ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब यहाँ पे कोई ऐसे उसके रिगार्डिंग कोई मूव करता है जो यूथ लीग की हम बात करते हैं। बट दिस इज ऑल्सो अ गुड स्टेप, एंड इसमें काफी ज्यादा इंपोर्टेंट एएफएफ से ज्यादा मेरे को लगता है कि स्टेट अफेयर्स एंड डिस्ट्रिक्ट अफेयर्स का रहेगा कि वो किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। Yeah, a very important point that Hiren brought up, because I remember Arsene Wenger, who's scheduled to visit India, himself said that whether or not you make it as a footballer, apart from your technical ability, will be decided between the ages of 14 to 18. So, Shan, keeping that in mind, how have you taken to the Blue Cups program, and what is the importance of leagues from 13 plus onwards as well? सी बेसिकली ये ब्लू कप्स का जो प्रोग्राम है ये एक्चुअली लास्ट मई महीने का टाइम था जब एएफएफ एग्जीक्यूटिव कमिटी टुक दिस कॉल, एंड इट इज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक रोड मैप ऑफ विजन 2047। जो विजन 2047 का जो हम लोग का रोड मैप है उसी का पार्ट है। जनरली यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है 35 मिलियन बच्चे जो 4 से 12 साल की उम्र के हैं उनको एंगेज करना 2026 तक, और उस नंबर को 100 मिलियन तक ले जाना 2047 तक। ये है बेसिकली उनका रोड मैप, हाउ इज दे आर एंगेजिंग चिल्ड्रंस ऑफ द एज 4 to 12 बाय 2026, मतलब नेक्स्ट 3 साल में। 35 मिलियन इज नॉट अ लेस नंबर। बेसिकली एएफएफ का जो सोच है अभी, दे वांट टू डेवलप ग्रास रूट फुटबॉल। आई थिंक उनका प्रायोरिटी अभी ग्रास रूट फुटबॉल को कैसे डेवलप करना है, और वो मोर एंड मोर फोकस करना चाहते हैं ग्रास रूट लैंडस्केप्स, माने इनलार्ज करना चाहते हैं इन इंडिया। तो उसी का पार्ट है ब्लू कप्स प्रोग्राम। आई थिंक ये एक डेवलप करेगा फाउंडेशन फॉर द ब्लू टाइगर्स। मतलब जैसे हिरेन बोल रहे थे दैट ब्लू कप्स बच्चे को कब है बच्चा और टाइगर्स है जो एडल्ट है, तो उनको डेवलप करने के लिए ब्लू टाइगर्स का फाउंडेशन ले करने के लिए ब्लू कप्स प्रोग्राम को लॉन्च किया जा रहा है। बेसिकली एएफएफ का एग्जीक्यूटिव कमिटी ने मीटिंग में जो लास्ट मंथ हुआ था उसमें अनाउंस भी किया था इसको। तो ये एक्चुअली एक मल्टी डायमेंशनल चीज है,
वहां पर कोलैबोरेशन सिर्फ मल्टीपल लेवल्स में होने वाले हैं, गवर्नमेंट, एनजीओज, स्कूल, क्लब्स, एकेडमीज और बहुत सारे सब मिलके करने का प्लान है। सब मिलके एकजुट होकर ये प्रोग्राम करेंगे। सो कॉम्प्रिहेंसिव कोई ग्रास रूट स्ट्रक्चर तो एआईएफएफ के पास इनिशिएटिव कभी नहीं किया एआईएफएफ ने, मगर अभी ब्लू कप्स के थ्रू वो एक रोबस्ट स्ट्रक्चर आने का चाह रहे हैं सिस्टम में। आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स सी। आई थिंक जितने भी ज्यादा ज्यादा बच्चे पार्ट करेंगे ब्लू क्लब्स प्रोजेक्ट में, इससे क्या होगा, मोर एंड मोर जितने बच्चे अट्रैक्ट होंगे, आई थिंक मोर एंड मोर पीपल विल गेट अटैच टू फुटबॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वही है फ्यूचर का एक बेसिकली इट्स एन रोड मैप। Yeah, Adama, Hiren just, I mean, Shine just said that the attempt is to get as many kids as possible to play football. Of course, that's our goal. But uh, again, coming to Hiren's point, what about the youth leagues in terms of players? I would start differently. The youth Yeah, leagues is yeah. a totally different discussion because the youth leagues is on top. It's the bridge between grassroots and senior level football. So it's youth football. So that is a Yeah. totally separate topic. If we come back to the Blue Cubs, I would think it's important to say that what has been mentioned, that we've had the baby leagues in the last few years. That is being rebranded. But my biggest concern remains, what are we doing with the coaches? We've got, if we look today, I don't have the numbers, but there are many kids who are playing football who 10, 15 years ago would have not had a chance to play in some sort of system in the baby leagues. So that's been a positive that the AFF has started. The next step is, how am I educating these coaches who are working with these kids? Because if I don't teach the kids the right thing at the age of 5, 6, 7, 8, 9, 10, up to 12, 13, that is where you need to get the basics in. Your competitions need to be smart in a way that on one side it is somewhat competitive, but on the other side you have to give every kid a chance. That is your biggest challenge when you go into grassroots, because on one side you want elite development already happening at that stage, but on the other side you want every kid, even that if you've got 20 kid, that number 20 kid should get X number of minutes across. If it's 2 months, 3 months, even 4 weeks, whatever, X minutes, guarantee that first. So how do we instill that into the coaches? I said, I have to develop all my players, first thing. And how do we also create pathways for coaches? Let's say I have a coach who works with under 6. What is the pathway of the coach theoretically? If he says, hey, listen, I want to coach a senior team in the future, what is the roadmap of starting, let's say, with an AFF license to get to the pro license in 10, 12, maybe 15 years? So all these questions, again, these programs are there. It's good. It's very important for Indian football. But this is a long-term program, not to forget. Therefore, the basics need to be right. You have some, Mizoram has a very good program. I remember I saw it for the first time in 2016 when we went with the German student national team over there. We worked with the grassroots kids on a very early morning, which was brilliant. They now used to work with the Tatars and set up the Center of Excellence. Now they work with the Reliance Foundation in different districts. That is very successful. Manipur had its own programs, which are sadly not working because of, again, internal problems. But you have certain things. Goa has certain programs which are running, other parts of India as well. And you need to somehow also look at involving the clubs so that there's a roadmap, that these small football centers that are being created, how do I get into the academy of a Mohun Bagan, an East Bengal, a Mumbai City, a Kerala Blasters, a Goa, a BFC? How is that? If you look at BFC, very good example. BFC focused first of all on Bangalore. Still does with its BFC football schools. Then if the kids are good enough, you put them into the under 13s, under 15s in Bellary. Right? It's not even kept in Bangalore now. So this is something which we need. And therefore, it's been mentioned, the youth leagues are a very crucial factor. And this combination would hopefully develop our players to be better equipped with these things in the future. Because technically at the moment, what I've seen across this calendar year,
most teams we faced look to be technically better than us, even though physically we are better than we used to be. My biggest concern, you need to work on the kids. Yeah. One point I want to add from Ronald sir is regarding the coaches जो उन्होंने बात की. No doubt about that कि grassroots के जो coaches है उसकी जो quality है वो improve करनी पड़ेगी. लेकिन एक चीज हमें वहाँ पे ये भी ensure करनी पड़ेगी. Lot of coaches not only do this you can say कि full time job, they are doing this as a part time job. So we have to secure their you can say financial aspect also to give them confidence कि you work. बिकॉज आप जितना पैसा मिलेगा आप उतना काम करोगे. सिंपल सी बात है. ये तो हर किसी मतलब ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है. तो अगर उसको वहां पे I think in India you need to change that, because that is something that you need to learn from Europe, where grassroots you normally don't get paid. You normally pay to be there. That understanding I feel needs to come in. It's very difficult because in India everyone is struggling to make ends meet and ensure that there is food on the plate every meal. But somehow we need to get to that point to understand that at the youngest level, even if I'm talking amongst the biggest clubs, let's say in Germany, the Bundesliga top clubs, let's say Bayern, Dortmund and all, their grassroots coaches are actually part-timers. And that money that they get doesn't even cover their cost of travel and transport and whatever. So therefore, do we get into that? Because if you're trying to make grassroots, first of all, costs covered for the organizer, whoever that is. That's why, the baby leagues, state associations, district associations, relatively quickly, a lot of them moved out because they can't fund it. They can't fund a senior level league. How are you going to fund grassroots football, right? So the funding aspect, if there's too much money being exchanged, that's a huge challenge that we have in the system. And also educate the coaches. That is again, doing licenses, very important. But what are they teaching the kids? How do we know what they teach? Are they teaching the right things, right? And that is something that is the biggest challenge. We need to find means and ways to educate our coaches and get more and more of the Blue Cups programs started across India. Yeah. I don't know, I just follow up because you said educate the coaches. Again, I just wanted to understand a little more as to what exactly are you referring to, because when you say educate, do you mean the football aspect as in it's everything. I think there's the one part is the licenses. Now the license is a must on one side, but on the other side, what's your aim as a coach? Yeah. And that is something that you have to find a way. Are you developing talent? Are you developing talent for the long run? Because also we are in a situation, and that's a global phenomenon, that a kid who's good at 10, or let's say 8, 10 or 12, because he's in early bloom or whatever, that he might not be even good at 14, 15, 16. And whoever is good at 14, 15, 16 might not be good at 20, 21, 22. Right? If I look at, let's say, the India under-17 World Cup squad, some of my best players or some of my potential future stars of India, due to different reasons, have not made it to the top. So the question is, how do we create that? How do we create an understanding? And Bihung is saying football philosophy. Yeah, what is our Indian football philosophy? Because we've got a mashup. We've got English coaches, Spanish coaches. Then we've got the regional thing that in Goa, Bengal, Kerala, you like to play flair football. The northeastern ones rather want, with the wingers and with the speed. It's Punjab, North, Kashmir. It's physical. What is our football? I mean, we could do a philosophical discussion. Shine and me as Bengalis love philosophical discussions, right? So again, that is if you decide on that, then you can work accordingly. Workshops, I think very important, is regularly, at least once a month, you need to have workshops. SKN is asking about coaches educators. Yes, we now have coaches educators, some very, very good one. But
Of course, they need to get better, but they need to also have a bigger reach. So all of this, we are still at a very, very nascent stage. But if these things like a Blue Cups program comes in, very, very good, very, very important. Now we come back to the things that I very often like to say is, how is the implementation? And how do you scale it? Because in India, scaling something, it's like the 11 million program pre under 17 World Cup. 11 million kids to reach India should not be a problem. We should be talking about, let's say, 200, 250 million kids. That is where I would say, if you can reach that many kids, and you get, let's say, 20 million kids to regularly play football, 25 million, I would think that that is something that we need to aim. And we need to aim for the stars. We need to aim for the sky, especially at grassroots. Basics. Because even we saw it against Malaysia, we have players in the national team, and you can't blame the players who can't do the basics right, because no one has taught them that ever. Yeah. And because now you mentioned philosophy, it just got me thinking a little bit. What would you like to see our philosophical approach be? Shine, if India had to have a footballing philosophy, one philosophy for the entirety of India, what would you see that? What would you want it to be? See, I remember I asked this question to one of my very good friends. Actually, he was the Indian national team coach, and he said me the same thing what Unavada said rightly said now. I think he said me the same thing what Unavada said. I think philosophy is very very difficult. First, we need to understand how we are as a team, how we play football. वो बहुत important है. Okay, हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग ये खेल सकते हैं, पासिंग खेल सकते हैं, बहुत you can say many things. But मैं एक कोच का बात नहीं कर रहा हूँ, because I had this opportunity to talk with many other coaches national team के जो भी कोच रहे हैं, and मैं पर्सनली उनसे इंटरेक्ट करता रहता, because मैं जानना चाहता था क्या चीज है जो हम लोग में खामियां है, इसलिए हम लोग का प्लेयर तो सब I think everybody from starting from Bob Houghton, then with Stephen and Igor से मैं उतना मिला नहीं हूँ, I think only once I met him, but Bob Houghton और स्टीफन के साथ मेरा बातचीत होता रहता था. देन आई थिंक स्टीफन के साथ तो बहुत बात हुआ था इसको लेके, दैट क्या प्रॉब्लम है बेसिकली. तो वो सब एक चीज हम लोग को बोलते थे, दैट ग्रास रूट लेवल का कोचिंग हैज टू नीड्स इंप्रूव. Whatever you do in the senior level, the packaging of your ISL and everything is good, but how you develop your young talents, ये important. बिकॉज अभी जो हमारे यंगस्टर्स को डेवलप करेंगे, उनका प्लेइंग स्टाइल कैसा होगा, क्या नहीं होगा, क्या फिलोसफी होगा, ये डिपेंड करता है उनका ग्रास रूट लेवल का कोच को उसका समझ है कि नहीं. जो मेरा मानना है जो है नहीं, क्योंकि ये एक अगर आदमी बोलता तो मैं नहीं उसको नजरअंदाज कर सकता था, बट ये बात जो फुटबॉल जानते हैं, मेरे से अच्छी जानते हैं, उनको जब मैं पूछा, उन्होंने भी ये बोला, इंडियाज बिगेस्ट प्रॉब्लम इज योर ग्रास रूट कोचिंग. ग्रास रूट लेवल में कोचिंग नहीं है, बिकॉज हमारे इंडियन कोचेस जो थे 90s में, वो भी काफी इंटरेस्टेड नहीं थे टू टेक द डिग्रीज. कोलकाता में मेरे को आई नो मेनी कोचेस, वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे कोचिंग. But Shine, there's a different thing. Just think that we're talking about grassroots football. Grassroots football was started about 10, 12 years ago under Rob Bahn. Rob Bahn and Wim Kovermans, who's now one of the key coaches, coaching educators of the AFC, they started officially grassroots football. So the point here is that grassroots football in India is very, very young. Because Kolkata has had coaching clinics for I don't know how many decades, right? But what are they teaching? Again, it's not just about the coaching. It's about how do you deal with kids, right? How do you treat kids? And in India, very often, it's a frontal thing. If you do a mistake, they will shout at you. I've seen that. It doesn't work. The point here is also, people are saying, Ranjit Bajaj says high press, someone says tiki-taka. No, we need, again, tiki-taka, Barcelona plays tiki-taka, Spain plays tiki-taka. Even Man City doesn't play tiki-taka under Pep. You have to play according to what you have, or you spend enough time to mold your team accordingly. Pep Guardiola, perfect example. He only won the Champions League because he finally realized, I need a classic number 9 to score goals. Only with Erling Haaland in the end, he was able to win the Champions League with Barca. So therefore,
Let's forget tiki-taka, high press, whatever. Try and realize, what can I do with my kids? Guys, we're already talking at a level where we should be winning the World Cup. Let's focus on the basics. What is the basics? Can I trap a ball? Can I play a clean pass 10 meters? My positioning on the field. I remember I worked last year. I visited a coaching camp, a clinic in Calcutta. The kids were really good with their feet, but their positional sense was a disaster. Right? They were all over the place. So can I instill something that also 6-year-olds, not everyone is running to the ball. Yeah. And this is something which is very difficult, where you need to work with the kids and make them understand, yes, the fascination is that round thing. But if you're playing in a team, you're a defender, you're a midfielder, you're a striker, but also let them have the fun. And the point here is when we teach them the basics of football, I still say, can you stop a ball? Can you play a pass? And where do you stand on the field? And this today, I was watching yesterday extended highlights of Malaysia versus India. Positioning, our biggest problem. And what are we learning? What are we learning? Because people are looking at the Premier League, at La Liga, Bundesliga, Champions League, World Cups. Good. But you have to break it down. Also, to the kids do you have? Right? And how much time do I have also? This is the question. If I'm working, let's say, once a week with the kids, I have to stick to very, very basic things. If I'm training thrice with them a week, it's different. So this is something which I sometimes feel when I see those coaches who have had the right intentions, but they don't have the tools, or, in our old discussion, we said they don't have the masala to really cook the things properly. This is what we need to instill. And this is the biggest challenge that Indian grassroots football has. And therefore, it's been mentioned, yes, we need foreign coaches to coach the coaches. That's why programs like the Premier League, British Council programs, which have come in, the Bundesliga has done stuff, La Liga has done stuff. Great. We need more of these. Yeah. And that is something we need to realize. And again, Bihung, tiki-taka, La Masia passing, it will not happen with us. 99% of the world talk about it. 99% of it can't play tiki-taka or La Masia passing football. That's the reality. We forget us. Top teams. Do you think Argentina was playing tiki-taka to be world champions? Was Brazil playing tiki-taka? Or, you have to adapt to what you have. And at the moment, this is something where at the grassroots, teach the basics. At youth level, take it to the next level. And and let the kids have fun and enjoy. So that is something which I feel we need to work. There's a lot of work to be done. Yeah. Well, Hiren, hopeful for change through the Blue Cups program? डेफिनेटली आई थिंक देखिए एक चीज जो मेरे को ब्लू कप्स पहले मतलब बेबी लीग्स होती थी और उसको अंडर दी वन रूफ लाना, आई थिंक एक सर ने जो बोला, आई थिंक एक आपको क्लियर एक आपको एम मिलता है कि अब ब्लू कप से अब इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करनी है। जैसे अब आपने क्लब्स लीग चालू की, फिर आपने जैसे सर ने बोला कि कोचिंग है, तो आप ब्लू कप्स के अंदर कोचिंग का डेवलपमेंट कर सकते हो। तो अंडर दी रूफ एक चीज आप लाते हो रादर देन की सारी चीजें बिखरी बिखरी पड़ी हुई है, तो उसको एक ज्यादा एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में आप कंडक्ट कर सकते हो। एंड फिलोसॉफी की जो आपने बात की, आई थिंक हमारे यहाँ पे ज्यादा टाइम इसको मिसअंडरस्टूड किया जाता है। हम गेम प्ले के साथ इसको इन्वॉल्व कर देते हैं कि भाई इस तरह का गेम प्ले इंडिया का होना चाहिए ग्रास रूट से लेके। लेकिन आई थिंक ये सारी चीजें कि आपका प्लेयर एक कंप्लीट प्लेयर है, तो कोई सी भी टेक्टिक्स के साथ वो खेल सकता है। उसको ऐसा नहीं है कि वो पासिंग ही खेल पाएगा, वो लॉन्ग बॉल ही खेल पाएगा। जिस प्लेयर को पासिंग आता है, पोजिशनिंग आता है, शॉट लेना आता है, वो किसी भी टेक्टिक्स में वो अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा। नो डाउट जितना वो ज्यादा जिस पोजीशन पे खेला होगा वो डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। लेकिन अभी जो इंडिया के लिए मेजर प्रॉब्लम है वो रादर देन दोस्त, मतलब जैसे सर ने जो टर्म्स बोले कि जो वर्ल्ड के बेस्ट टीम यूज करते हैं, रादर देन दैट हमारे पास फोकस करने के लिए जो हमारे प्लेयरों की जो भी बेसिक्स सही नहीं वही है। मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ। मलेशिया वाला मैं भी एग्जांपल देने वाला था
कि क्यों हम वहां पे हमने 4 गोल खाए, क्योंकि आप देखिए एक एक पास पे हमारे प्लेयर खुल रहे थे, और क्यों खुल रहे थे, क्योंकि उनकी पोजीशनिंग वहां पे सही नहीं, वो अपने आप को पोजीशनिंग सही कर नहीं पा पाए, नहीं तो अदरवाइज वो गोल ऐसे नहीं थे कि हम यहाँ पे गलती या मिस्टेक करते। सो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि जो इंडिया को ठीक करने की जरूरत है। इसके रिगार्डिंग एक और थे, just to add to that, sometimes we were trying to play too much of passing football, where you sometimes just clear the ball. Sounds stupid, but it is. Look at once when Nikhil Pujari was on the wing and plays it into the middle, and we're open. Middle, and Ayman breaks through and nearly scores. The goal, the 3-1. Mahesh Naurem is trying to play a pass to the last man, to Mehtab. You play, and there are 3-4 Malaysians waiting for that. Clear it to the front. So that is the thing that and this is something which a friend of mine does this. She works on brain sense of playing football. Can your brain process? That's the biggest strength of, let's say, a Xavi and an Iniesta in their prime at Barca. They could process, like, where do I play the ball? And that is something where, again, you saw against Malaysia. Malaysia was pressing high, was going on the man, and we were uncomfortable with that. We were very uncomfortable with that. We love teams which are, again, we can't break them down, but who are playing the low line. Yeah. And that is something which you need to learn. And that is something which is very, 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 very important. To use your brain, intelligence. Exactly. That's important. ये सर एक दूसरे मैच में भी देखने को मिला था, नवबहर के सामने जो सेकंड हाफ जैसे स्टार्ट हुआ और उन्होंने जैसे हाई प्रेस स्टार्ट किया, हमारे प्लेयर का जो डिसीजन मेकिंग है वो वहां पे जैसे ही प्रेस हाई हुआ, वो मतलब अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे थे कि मेरे को सिंपल पास करना है, क्लियर करना है, बैक पास करना है, फ्रंट पास करना है. Two things. You were not sure what you were doing, and at some stage you got scared. You will become shaky. क्या करना है? Shaky. And that is something which you have to teach at an early age. That confidence. I have the ball on my foot. What do I do? Also, you saw some of the players were, Suresh, very often 4, 5, 6 touches. Too many. In today's football, 2, 3, and then you have to release the ball in an ideal case scenario. But you have to have options. He didn't have options. So that is something. How can Igor Stimac teach this to a national team? He doesn't have the time. That's also a fact. And these are the things I remember Bob Houghton used to work on when he had those 6 months to prepare for the Asian Cup. He was working on the basics. I remember we were in Barcelona. You thought India was a grassroots team. He was teaching them basics sometimes. He did sessions once in a while which were really, really basic. And that is something, if we have that in place in the grassroots, you don't need to teach it at youth level. Youth level, you take it to the next level. Use your brain. How do you play? Positional sense. And that is something which is very important for our football. Very, very important for our football. And again, if we do it today, you will see the results in 10, 15 years. That is our other problem. We want to see the results tomorrow. I want to see the results tomorrow. I want to see us play against the best. We all want to see India play against the best. But we're not ready. That's the sad part. Apuya being mentioned, good example. But what did help Apuya last year? 2 weeks in Belgium at Lommel. Because in Belgium, you learn when you are a defensive number 6 that you don't have the time. ISL though, you can turn around, play a little and play a pass. No. Udar mein he learned. Why does Ahmed Chahu play in India and not in Europe? Because he's got the class, no doubt about it. But in Europe, he would be too slow. And he would hold on to the ball too long. These are sad, but realities we need to speak about. Yeah. Shan, and before we close, your thoughts about the Blue Cups program? We've spoken a lot about, of course, get the basics right. Just get the first layer of bricks planted and sealed, and then we build, and then we move on. Your expectations from this program? I think expectation, as said by AFF, I think to get more and more kids into this program, and that will be very interesting. उन्होंने जो अपना
टारगेट सेट किया है, काफी मेरे को लगता है काफी एग्रेसिव एक टारगेट उन्होंने लिया है। अगर मैं उनका उनका अगर देखूँ तो इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज ये क्या हो रहा है, एक एनजीओ स्कूल सबके साथ एकेडमी स्कूल्स सब एक मिलके एक मल्टी डायमेंशनल कोलैबोरेशन का बात एएफएफ ने किया है, जो पहले कभी नहीं हुआ है। मैं यही देखना चाहता हूँ 2026 में जो शॉर्ट टर्म टारगेट है, अगर वो 35 मिलियन चिल्ड्रन को इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, 35 मिलियन का नंबर काफी छोटा नहीं है। आई थिंक 2026 वाला अगर 2026 तक का जो उनका प्लान है अगर वो एग्जीक्यूट कर ले तो आई थिंक गुड एंड गुड। लेट्स बी होपफुल ना, हम लोग होपफुल रहते हैं, या फिर एटलीस्ट ये प्लान तो बनाया है। आई थिंक आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम ऐसा कुछ प्लान बना है। लेट्स बी होपफुल दैट with all the stakeholders in place, and we have a great time ahead for Indian football, and this Blue Clubs program will lead us to new glories and great results for future. Yeah, we've been speaking about grassroots football. We've been speaking about get it at the lowest level a few times before this podcast. Nice to see that there is some development on it, and let's just hope that it reaps benefit for Indian football and that the implementation, of course, is in place. Thanks, guys, for joining in. Please do like, share, and subscribe to the stream, to all the 4 channels: Sports Khabri, Indian Food and Football, Aaron Foot, and Curious Harry. And yeah, the ISL is almost back, and we'll be back with more content around the ISL itself. Good night. Good night. Thank you and good night, everyone. Good night, good night, good night, good night.